Hello everyone. If you are appearing for ZET 2025, then probably this session is for you. I am Saral Naishir, your personal coach for all your queries regarding quantitative aptitude, data interpretation, logical reasoning for all the management entrance tests. And today specifically I am going to talk about QA and DI section of ZET. And I welcome you all to this platform of Jagran Josh, the leading player for all your career queries regarding MBA or any other examinations as well. तो मैं आप लोगों से आज बात करूंगा एक सेक्शन के बारे में आफ्टर आई मीन टीचिंग फॉर दिस सेक्शन आई वुड से फॉर लास्ट 20-21 years. In my experience, whatever I have learned about CAT or ZET, I'm going to share that with you in this session today. So let's start without any further delay. सबसे पहले आप लोगों को पता होगा ZET में हमारे पास 3 sections आते हैं. One is verbal ability and reading comprehension. The other one is decision making. And the third is QA/DI. Yes, you heard it right. ZET में QA और DI एक ही सेक्शन के अंदर आता है, अनलाइक CAT जहां पे आपको DI एक LRDI वाले पार्ट में दिखता है और QA जो है इट्स ए डिफरेंट सेक्शन. दैट डज नॉट हैपन विद ZET. ओके, नाउ व्हाट ऑल इज देयर इन QA/DI? What is a good score? What kind of cutoffs are there? So all those things I am going to discuss in this small and crisp session with all of you. I'm sure it is going to be useful for you. So watch this session till the end. We are going to talk about QA and DI. So first of all, when I talk about this section, आता किस तरह का है ZET में, क्या क्या पूछते हैं इस सेक्शन के अंदर. So if you look at this screen, you see that in QA and DI, always in ZET, there has been 28 questions. I mean, I'm talking about last 4-5 years. And the number of questions from DI, they keep changing. As you see, ZET 2024 had 12 questions. This is the first question that might come up to your mind. Sir, ZET 24 हो चुका है क्या? देखिए, when I talk about CAT 24 would be actually be there on 24th of November, लेकिन ZET क्योंकि जनवरी में होता है तो 2024 ZET already हो चुका this year in January. And now the ZET which is going to be there, it is going to be ZET 2025. So yes, 2024 ZET has already been there. 12 questions उसमें DI के थे, 12 questions were there and 16 questions from QA. Whereas when you go to 2023, we had just 6 questions from DI and the remaining 22 were from QA. 2022 में जाते हैं पीछे तो 12 हो जाते हैं DI के, उससे पीछे जाते हैं तो 9 हो जाते हैं. So more or less you can say the number of questions from DI, they remain in the range of 6 to 12. But there is something peculiar about this as well. ये जरूरी नहीं है आप ये बोले कि 6, 9 या 12 questions ही DI से आते हैं. Actually ZET asks you questions. कई बार क्वांट के क्वेश्चंस भी वो एक सेट टाइप पूछ लेते हैं जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं. ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू समटाइम्स से कि इसको DI बोलूं कि इसको क्वांट बोलूं, तो एग्जैक्टली उसको सेग्रीगेट करना शायद मुश्किल हो. बट अल्टीमेटली यू कैन से जब मैं यहां 12, 6, 12, 9 बोल रहा हूं, दिस इज प्योरली DI जहां पे आपके पास टेबल्स होती हैं, बार ग्राफ्स होते हैं या पाई चार्ट्स होते हैं. सो दिस हैज बीन द स्ट्रक्चर ऑफ ZET in the last 4 years, right? But this is the structure. The next thing is that what all topics have been there in quant or DI when I talk about this. So पहले मैं DI के बारे में बात करता हूं, फिर quant पे भी आएंगे. When I talk about DI of CAT, let's talk about CAT versus ZET a little bit over here. जब मैं CAT के DI के बारे में बात करता हूं, CAT के DI में actually you see different kind of sets. If you have prepared for ZET, I'm sure you would have also prepared for CAT. तो वहां पे you see charts like sunburst chart is there, a radar graph is also there, a Gantt chart is also there, तो bubble chart is there. बहुत अलग अलग तरह के वो आपसे ग्राफ पूछते हैं. But somehow ZET does not do it. ZET आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछता है DI के अंदर, ज्यादातर वो क्वेश्चंस टेबल बेस्ड होते हैं. एक प्योर आपको टेबल दिया होता है जिसमें आपसे DI बेस्ड क्वेश्चन पूछता है. उसके बाद उसके अलावा आपसे क्या क्या पूछते हैं, द बेसिक टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. वेरी रेयरली आई हैव सीन सम सेट्स फ्रॉम लाइन्स ग्राफ एज वेल. Similarly, I have seen sometimes the bar graphs as well. But most of the times they would be asking you questions which are based upon tables. However, there is another difference, right? Another way where ZET differs from CAT in DI, that is, जब मैं बात करता हूं CAT के बारे में, CAT does not ask you very calculation intensive questions. No, they don't. But ZET does.
जेट में आपको डीआई में ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा यार इसमें तो काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं. दे डू आस्क यू समटाइम्स द लेंथी क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन फॉर दैट, because ZAT में there is no sectional time limit on the sections. I mean, it's not like कि QA plus DI आपको 40 minutes या 50 minutes या 60 minutes में ही करना है. Any time you can increase the time or decrease the time depending upon your strengths, right? Depending upon the difficulty level of the other sections vis-a-vis QA plus DI, वो एग्जाम के टाइम पे ही आप डिसाइड कर पाएंगे. सो उन सारी चीजों पे ये सब डिपेंड करता है. But when I talk about quantitative ability, what happens, you see here. So once again, there is a major shift from CAT over here that you see. That sometimes I see just 2 questions from arithmetic, 6 from algebra, 3 from number system. That was ZAT 2024. ZAT 2023 see 5 questions from arithmetic, but 5 from numbers, 5 from geometry and 4 from algebra. If I go back, ZAT 2022, it asked 2 questions on arithmetic, 4 on algebra, but 7 questions on number system. So somehow this table tells you कि Z का कोई particular pattern ही नहीं है जो CAT में फिर से होता है. CAT में we know arithmetic has always been the single largest area, followed by algebra, then followed by geometry. लेकिन यहां कभी आपको नंबर सिस्टम पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखते हैं, कभी ज्योमेट्री भी आपको काफी ज्यादा नजर आता है, कभी कभी आपको अलजेब्रा भी ज्यादा नजर आएगा, कभी कभी आपको अरिथमेटिक भी ज्यादा नजर आएगा. नो पर्टिकुलर पैटर्न दैट दे फॉलो. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ठीक है ये 2 टॉपिक करता हूं, आई विल बी वेरी गुड एट दीज 2 टॉपिक्स एंड आई गो इनटू द ZAT एग्जाम. नो, प्रोबेबली यू कांट think about that because ZAT might ask you anything. You have to be prepared with all those things. I'm sure you got my point over here. Okay, further moving on, I see that when I talk about the cutoffs, so what are the cutoffs for the different examinations? So let's talk about that too. So when I talk about the cutoffs, so ZAT is very particular about the cutoffs, right, for the 2 different these courses, BM and HRM. And apart from that, they also see that there is a different cutoff for engineers and non-engineers. I'm sure some of you would not like it because we have seen this kind of partiality being done in CAT as well. बहुत सारे colleges के selection criterias में ये होता है कि engineer है तो घुसना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा. Now ZAT also starts doing it. Yes, they do a little bit of that. Though BM में वो ऐसा नहीं करते. In the BM course, the cutoff for the males is roughly around 9 to 10. ये मैं आपको 2024 की cutoffs बता रहा हूँ. 2025 में क्या होगा या 23 में क्या था, we can't say, but they have been roughly around these. तो 9 से 10 और फीमेल्स की अगर आप देखें तो exactly 1 less. Similarly, मैं इंजीनियर्स की अगर मैं देखता हूं तो मेल्स के लिए कट ऑफ इन दी HRM कोर्स वाज 8 to 9, तो फीमेल्स के लिए 1 लेस. नॉन इंजीनियर्स में अगर मेल्स हैं 7-8, तो फीमेल्स के लिए इट इज अगेन 1 लेस. सो समहाउ यू कैन से इट हैज ऑलवेज बीन 1 लेस फॉर द फीमेल्स देन द मेल्स, एंड फॉर द इंजीनियर्स इट इज स्लाइटली हायर देन द नॉन इंजीनियर्स इन HRM. Now 9-10 cutoff, there is another significance of this which I want you all to understand, and that significance is that when you talk about the ZAT exam vis-a-vis CAT exam, in CAT the sectional cutoffs are not that high. For example, if I talk about a college like IIM Ahmedabad, probably the best college under CAT, IIM Ahmedabad का भी अगर मैं sectional cutoff percentile देखूं ना QA का, it will be roughly around 80 percentile. Yes, you heard it right, 80 percentile. And that 80 percentile comes at a very low score of something like you can say 4 questions in QA section. वहां पे 3 marks का एक question होता है तो 12 marks. ठीक है, यहां पे each question is of 1 mark. The overall cutoff might be very high, लेकिन वहां अगर मैं बात कर रहा हूं आपके क्वांट सेक्शन की कट ऑफ की, वो बहुत कम हो सकती है, लेकिन ZAT में ऐसा नहीं होता. The overall cutoff would be around 33 to 35. बट सेक्शन की कट ऑफ आपको 9 से 10 नजर आ रही है, विच इज प्रेटी हाई. दैट मीन्स द चांसेस आर वेरी लेस दैट ए पर्सन क्लियर्स द ओवरऑल कट ऑफ बट डज नॉट क्लियर इट इन द सेक्शंस. बड़ा मुश्किल होता है, मतलब उसके बिना बात ही नहीं बन पाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तीनों में कट ऑफ्स काफी हाई होती है, DM में भी VARC में भी. सो इट इज नॉट लाइक तीनों सेक्शंस में 333 लिया है, ओवरऑल 33 लिया है, वो नहीं है, राइट. इट्स प्रेटी हाई.
अगर तीनों सेक्शंस की कट ऑफ आप क्लियर कर जाएंगे तो ज्यादातर चांसेस हैं आपकी ओवरऑल भी क्लियर हो ही जाती है, तकरीबन आप उसके आसपास पहुंच जाते हैं, जस्ट 5-6 मार्क्स मोर एंड यू आर थ्रू. So therefore it becomes very important for all of us to have focus on all three sections equally, because these sectional cutoffs are high for all the three sections. We can't take any one of them lightly. But what is a desirable score? I mean, according to the, I would say, the strength of a person, in my opinion, what a person should be doing in QA, that you again see on the screen, I feel that a person who is strong in quantitative ability should be targeting a score of 16 to 17. Yes, you heard it right. You might be saying 16, 17 is probably very high out of 28. But I would say I'm talking about a student who is strong in quantitative ability. So you can do it because you do not have a sectional time limit. So within 60 to 65 minutes, you can easily score something like 16 to 17. So this is my desirable score for a candidate who is strong in quantitative ability. But when I talk about a person who is little moderate in QA, I would say target a score of 13 to 14. But for a weak student, I would say target a score of 10 to 11, even if you are weak, because ultimately the sectional cutoff has to be cleared, right? Of course, I am saying all these things from the perspective that if you are targeting a college like XLRI, but let's say you are an average student or your hopes are not that high, आप सोच रहे कि नहीं XLRI शायद मैं ना कर पाऊं, शायद मेरा क्वांट उतना अच्छा नहीं है या मेरा वर्बल उतना अच्छा नहीं है, तो मेरा टारगेट थोड़ा सा उससे नीचे का कोई कॉलेज है, मुझे XIM भी मिल जाए, शायद मैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी देख सकता हूं, या मैं कोई और कॉलेज उसी उसका लीग का देख सकता हूं. तो ऐसे केस में जस्ट लुक एट देयर सेक्शनल कट ऑफ्स एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो आई मीन इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं इस कोशिश में लग के बहुत सारा क्वांट पे टाइम लगा के और ये स्कोर ना ला पाऊं और उसकी वजह से मेरे बाकी दोनों सेक्शंस भी खराब हों. डू नॉट लेट दैट हैपन, राइट? The overall score in any case is important, because for the colleges where these sectional cutoffs are not this high, at least that overall would work. तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा ओवरऑल स्कोर है. लेकिन अगर मेरा टारगेट XLRI है, देन आई वुड से तो मुझे यहां तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, राइट? दिस इज अ सेफ स्कोर. जनरली वी हैव नॉट सीन अ कट ऑफ ऑफ QADI गोइंग अबव दिस. हालांकि यू नेवर नो व्हाट हैपेंस दिस ईयर, हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए, एकदम से कट ऑफ थोड़ा सा इससे ऊपर चली जाए, बट द चांसेस आर एक्सट्रीमली रेयर. But honestly speaking, a good student can always, target a score of 16 to 17. This is doable. I have appeared for that more than 10 times, and I know that it is easily possible for a student within 60 to 65 minutes. Of course, आप उस टाइम को 5 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं according to your choice. That can be done. So what can be done in these remaining days so that you can prepare well for your exam? So some of the tips from my side. First, the concepts are very important. Yes, in Z we say instead of speed you should be more focusing upon the concepts. As I told you that Z actually asks you questions from diverse areas. You can't say that okay I just do these two areas, that will be sufficient. तो सभी concepts आपको पढ़ने पड़ेंगे. At least make sure कि आपने सबके basics तो पढ़ ही लिए हैं, which is the most important part here. Secondly, the speed versus accuracy thing. In CAT we generally say that okay, speed is very important, but not in Z, because Z has a lot of time. So accuracy is more important here. Do not try to do questions very fast. There is no need to do that. So just try to do the questions as accurate as possible, because you have a lot of time. 165 minutes होते हैं पूरा पेपर करने के लिए. That's more than sufficient for all of us. The third thing here is the non-CAT areas. As I just told you that there are areas like modern mathematics, trigonometry is there. CAT does ask you questions on that. Base system is an area from which CAT asks you questions. Rather, Z asks you questions. Rather, if I talk about complete number system, कितना ही CAT number system पूछता है, लेकिन Z पूछता है. So for those areas also you have to be prepared. And finally, beware of the cutoffs. As I just said, the cutoffs of Z are relatively a little higher. So therefore you can't be you can't be lazy at this point that okay ठीक है थोड़ा बहुत कर लेंगे मैथ में, जो कैट में चल सकता है यहाँ नहीं चल सकता है. You have to clear those cutoffs. You have to get that score where you reach XLRI by clearing the cutoffs.
So just keep all these things in your mind, and I'm sure this is going to be pretty useful for all of you. So that was all from my side, guys. All the very best. I hope this session brings you some kind of respite for your preparation and it gives you some important tips. Keep following Jagran Josh for more such videos. Thank you very much, guys. All the very best.